हेलो फ्रेंड्स, आई एम मनीष किशोर एंड यू आर वाचिंग स्कूल मेंटर्स। लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि दो नंबर्स जो 100 के पास हों और दोनों नंबर्स जो 100 से कम हों उनकी मल्टीप्लिकेशन इजी मेथड से हम कैसे कर सकते हैं। इन दिस एपिसोड वी विल डू द सेम मल्टीप्लिकेशन बट फॉर नंबर्स विच आर मोर देन 100। सो एज ऑलवेज हम जो बेस है अपना इस बार भी 100 लेंगे। बेस इज अगेन 100 बट इन दिस केस आवर नंबर्स आर गोइंग टू बी मोर देन 100। So let's take up an example. Say we are taking 103 multiplied by let's say 107. So concept last वाला ही रहेगा, कोई ज़्यादा difference नहीं है। इसमें हमने base 100 लिया है, तो 103 is 3 more than 100. So we just write here plus 3. Similarly 107 is 7 more than 100. So we write plus 7 in front of 107. Now again the same thing goes over here. 7 3s are 21. We multiply these two numbers. 7 and 3 21. So we write 21 and plus again becomes plus. So there is no problem. We straight away write plus 21. Now अगर हम इसको इकट्ठा देखें 703 plus 7 is 110 and 707 plus 3 is again 110. So चाहे हम ये डायगोनल ले लें चाहे हम ये डायगोनल ले लें, जस्ट इनिशियल नंबर में दूसरा नंबर हमने ऐड करना है। वी राइट द आंसर। सो 103 plus 7 is 110. So the answer for 103 multiplied by 107 is equal to 11021. That is our right answer. ठीक है। So we will take another example for this. Say let's we are taking 103. Okay, we have already taken 107. So let's take 106. So इस केस में this is 3 more than 100, this is 6 more than 100. So what is our answer going to be? 103 plus 6 is 109. 6 3s are 18. So that's the answer. So basically concept क्या है कि हम, जैसे मैं पहले भी वीडियोस में बात कर चुका हूँ कि हमने हर सब्जेक्ट जो है वो लेफ्ट टू राइट लिखा है, तो why not maths? Let's write maths also from left to right, so and see how simple the calculations become. So let's try again. Let's say 102 multiplied by 108, और अगर मेरे को डायरेक्टली इसको लिखना है, so this is 2 more than 100, this is 8 more than 100. अदरवाइज आप सीधा इनको ऐड भी मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। So 102 plus 108 is 110. 8 2s are 16. So our answer is 11016. Once more, let's say 103 multiplied by 104. So this is going to be 103 is 3 more, this is 4 more. So 3 4s are 12 and 103 plus 4 is 107. So 10712. So I hope in this video थोड़ा सा confidence आपका बढ़ा होगा। And now looking at these two episodes, the last one and this one, now we can do multiplication of 3-digit numbers that is more than 100 or 2-digit numbers which is less than 100. But this is an ideal situation. In our next episode, we will try to show you something whereby if one number is less than 100 and one number is more than 100, how to do the multiplications. So do like the video and subscribe to our channel if you think this is going to help you, and do share it with your friends. Thank you very much for watching this video. Jai Hind.